Hello dear students. Today in this lecture we are going to discuss about the fungal biofertilizers. In last lecture we have discussed about the bacterial biofertilizer. Now in today's lecture we will discuss about the fungal biofertilizers. So this is the diagram of the roots and the spores. So let's start with the fungal biofertilizer. The example of fungal biofertilizer is VAM. VAM stands for Vesicular, Arbuscular, Mycorrhiza. So this is the full form of the VAM, Vesicular, Arbuscular, Mycorrhiza. What is VAM? Actually, VAM is formed by the symbiotic association between certain Phycomycetes fungi and angiosperm roots. So it is the combination of, or it is the product of symbiotic association where both the partners are benefited. तो symbiotic association किसके बीच में होता है? Between the Phycomycetes fungi. Phycomycetes, it is the type of fungi, and angiosperm root. Angiosperm, these are the flowering plants and they produce the seeds. तो इन दोनों का जब symbiotic association होता है, the product is obtained, that is VAM, Vesicular, Arbuscular, Mycorrhizae. So it is the symbiotic association between plant roots and the soil fungus. Plant roots means angiosperm roots and the fungus is Phycomycetes. VAM plays great role in inducing plant growth. So there is a key role of VAM for the growth of plants. VAM are the symbiotic, endotropic or endophytic soil fungi. What is endophytic, or it is also known as endotropic, means they live inside the plant. That is the endophytic. तो ये VAM कहाँ रहते हैं? This live in the symbiotic association with the plants. Okay, so that is the endophytic soil fungi that colonize the roots of approximately 80% plants. तो इनका habitat ही है, they live in the roots and 80% of the plant roots are occupied by this VAM. How it is occupied? This is the diagram of VAM. How VAM is occupied in the roots. तो जो ये ब्लू कलर की लाइनिंग्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाएं, it is the structure of root, outer layer epidermis, hypodermis, cortex, और यहाँ पर हमारा VAM spread है. As it is the fungi, so hyphae, mycelium, ये उसके structural parts हैं. Vesicle is there. Arbuscules का मीनिंग होता है इट इज़ लाइक अ हेयर्स और सीलिया लाइक स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से कंप्लीटली रूट्स में स्प्रेड होते हैं, रूट्स में सर्वाइव करते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हाउ VAM ऑक्यूपाइज द प्लांट रूट्स. कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट. VAM hyphae means it is thread like structure and it is the mycelium of fungi or mycelium of fungus. So VAM hyphae, it helps in retaining the moisture around the root zone of plants. It increases the resistance to root-borne or soil-borne pathogens and nematodes. तो इसका फ़ायदा क्या है कि जो nematodes है, these are the worms, round worms हैं. So this VAM, it increases the resistance power against these pathogens and nematodes. So it prevents from the pathogens and nematodes. So this is about the VAM. Soil, ये जो circular form में दिखाया है, like a nodule form, it is nothing but it is the VAM, how it has been spread in the root. VAM culture जो मार्केट में सेल होता है. So this is the VAM culture. Now we will see about the production of VAM.
So firstly, for the production of VAM, we require the isolation of spores. So VAM spores are isolated. VAM spores, or we can say spores of VAM fungi, or are also called as क्लैमिडोस्पोर्स और अजाइगोस्पोर्स. ठीक है, तो वैम के स्पोर्स को क्लैमिडोस्पोर्स भी कहते हैं या फिर अजाइगोस्पोर्स भी कहते हैं. Now there are two types actually, ectomycorrhizae, two types of this mycorrhizae. First one is ectomycorrhizae and second is endomycorrhizae. So ectomycorrhizae, it is an association that take place, it is not mentioned in the slide. Ectomycorrhizae or Ectomycorrhiza, it is an association that takes place at the surface of roots. मतलब ये ectomycorrhizae ये reproduce होते हैं themselves, they are not depend in the host plant. अगर होस्ट प्लांट नहीं भी होगे, स्टिल दे आर एबल टू सर्वाइव. दैट आर नोन एज एक्टोमाइकोरिजा. सेकेंड इज एंडोमाइकोरिजा. दिस आर द फंजाई दैट पेनिट्रेट इनटू द रूट कॉर्टेक्स and form the arbuscular within the root cells. Okay, so VAM is the endomycorrhiza. Getting my point? तो दो टाइप्स है माइकोरिजा के, एक्टोमाइकोरिजा एंड एंडोमाइकोरिजा. एक्टोमाइकोरिजा, उन्हें प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है फॉर द ग्रोथ, लेकिन एंडोमाइकोरिजा दे डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट एंड फॉर्म द आर्बस्क्यूलर. सो वैम, it is an example of endomycorrhiza. Already we have discussed in introductory part that it is an endophytic. So let's talk about the production. Firstly, VAM spores are isolated. VAM spores are also known as chlamydospores or zygospores. Secondly, after isolation of spores, these are mixed with the sterile soil. So spores लिए हैं, mix किए हैं in the sterile soil. Third step is that soil along with the VAM spores, they are filled in the pots or they are filled in the open vessel. Fourthly, host plant is transplanted in pots. फिर प्लांट, ये प्लांट किया जाता है into that pot and that is our host plant. Why this host plant? Because यहाँ पर ये जो VAM fungi है, they survive with the symbiotic association. तो ये symbiotic association के लिए plant, यहाँ पर association होता है between the plant and this soil. Okay, so soil fungi. So host plant is transplanted in the pots. We kept that pot 3 to 4 months in the greenhouse. After 3 to 4 months, this soil plus root is soaked in the liquid. ये step क्या है? Soil in the pot along with the roots of the host plant is macerated or macerated. So what is meaning of macerated? Here it is a technique which in which we soak or in which we soak any substance in the liquid, softened by soaking in the liquid, that is known as the macerated. तो यहाँ पर हम soil plus root ये soak करते हैं liquid में and we after soaking we dry it till it attains 5% moisture. यानी कि moisture level ये ज़्यादा high नहीं रखी जाती. It is kept at very, not very but at a low concentration. So it is dried till it attains a 5% moisture content and at last dried soil inoculants used for the field application. तो completely जब वो dry in the powder form हो जाए, it is used for the field applications. So this is the production of mycorrhizae, which is very simple. Spores isolate किए जाते हैं, then it is mixed with the sterile soil. फिर ये सॉइल अलॉन्ग विद द स्पोर्स पॉट में फिल की जाती है और इसके बाद एज इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो होस्ट प्लांट
ये प्लांट किया जाता है पॉट में एंड इट इज केप्ट फॉर 3 to 4 months इन ग्रीन हाउस. आफ्टर 3 to 4 months सॉइल प्लस रूट किसके, वो होस्ट प्लांट के. ओके, सो सॉइल प्लस रूट इज सोक्ड इन द लिक्विड and then it is dried till it attains the 5% moisture, and that dried soil inoculants, it is used for the field application or for agricultural purpose. Now what is the use of VAM? VAM, it enhances the feeding area of the plant root is as the hyphae spreads around the roots. तो ये जैसे इसके हाइपी या इसकी माइसेलियल ग्रोथ होती है तो ये कंप्लीटली रूट का एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है. एज इट ऑक्यूपाइज द रूट एरिया, सो इट सर्व्स एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट so that there is proper growth of the plant. This is the first use. Second, mobilizes the nutrients from distances to roots. आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक या फिर आप इसकी प्रॉपर्टी ही कहिए कि इट इज़ स्प्रेड इन अ एलोंगेटेड वे और कंप्लीटली ये रूट का एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है. सो जो रूट्स ये डिस्टेंट एरिया में है, न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू दैट रूट्स विच हेल्प्स फॉर द प्लांट ग्रोथ. इट स्टोर्स द न्यूट्रिएंट्स स्पेशली phosphorus. So phosphorus like nutrients are being stored. It removes the toxic chemicals like phenolics which may disturb the plant growth, or it may hinder the nutrient availability. It may lower the nutrient availability. तो ये toxic chemicals remove करते हैं from the soil. It provide the protection against other fungi and nematodes. जो harmful fungi हैं, जो nematodes हैं, roundworms हैं, उससे ये प्लांट की ग्रोथ को या फिर उससे ये प्लांट्स को बचाती है. सो इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट अगेंस्ट फंजाई एंड निमैटोड्स. इट इंक्रीजेज द ग्रोथ रेट इन प्लांट्स. तो स्पेशली वैम ये कौन से प्लांट या कौन से क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर द सिट्रस, फॉर द मेज, फॉर द व्हीट एक्सेट्रा, जस्ट टू enhance the growth and to stimulate the production of plant stimulating hormones. Lastly, it reduces the sensitivity of crop towards the high salt concentration and heavy metals. तो जो crops ये sensitive होते हैं towards the high salt concentration or towards the heavy metals like mercury, तो ये वो sensitivity कम करने में मदद करता है और it makes resistant to this high salt concentration and heavy metals. This is all about the VAM introductory part, production of VAM and some applications of VAM. Thank you.